गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। प्रणाम, वणकम, सत श्री अकाल एंड जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट अनस्टेबल एडवर्सरीज ऑफ इंडिया एंड द कॉन्टोर्स ऑफ इंडिया सिक्योरिटी मेकओवर। और ये टॉपिक के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ हैं जनरल राज शुक्ला। वेलकम जनरल राज शुक्ला, वेलकम टू गनर शॉट वंस अगेन। Thank you very much, sir. बहुत And great pleasure to be back. yeah, it's a great pleasure to be back and with you on Gunner Shot, because we've always had good discussions, intellectual discussions. And today, though we've spoken of unstable adversaries, we'll speak. हम बात करेंगे पाकिस्तान के बारे में, थोड़ा चाइना के बारे में, क्योंकि ये दोनों देशों में थोड़ा इंस्टेबिलिटी हो रहा है। पाकिस्तान में जैसे आपको पता है कि वहाँ कंगाल है, virtually it's an army, there's now a dictatorship almost in place and एक puppet government है और टीटीपी अपना चला रहा है, चित्राल में कुछ हो रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। और इसमें एक काप बुना जा रहा है कि $25 बिलियन आएगा अरब देशों से। वो एक काप है, बट इट जनरेट्स इंस्टेबिलिटी। उसी तरीके से चाइना को देखिए, अर्थव्यवस्था डूब रहा है, अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत इश्यूज हैं। और आज ही मैं एक प्रोग्राम देख रहा था जहां वो बोल रहे हैं कि अगले 10 साल तक ये अर्थव्यवस्था चीन का सुधरेगा नहीं। और पर जैसे हम बात करते आए हैं, चीन का जो मिलिट्री बिल्डअप है, उसका डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट है, वो सब बढ़ रहा है। सो दैट्स अनदर काइंड ऑफ इंस्टेबिलिटी। ऊपर 2 हफ्ते पहले या पिछले महीने इनफैक्ट ब्रिक्स का समिट हुआ था। 2 दिन पहले इनफैक्ट यस्टरडे तक ये ईस्ट एशियन समिट हुआ एज पार्ट ऑफ एशियान, एंड और कल से G20 होने वाला है। और इसका भी कुछ असर होगा क्योंकि जी जिनपिंग यहाँ आए नहीं, राइट। एंड देन विद दिस ऑल दिस इन माइंड, जैसे हम बात करते आए हैं कि कुछ तो हमें बदली करने की जरूरत है हमारा पूरा सिक्योरिटी सिस्टम को, क्योंकि बदली होने वाला है। We have 4 parts today, so I mean you can take on from wherever you want, जिस जहां से आप बात करना शुरू कर सकते हो, आप प्लीज शुरू कीजिए। बिल्कुल सर, तो शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से सर। हाँ या पाकिस्तान से, ऑलवेज एंटरटेनिंग। तो उसके 2 पहलू हैं सर, जो जब आप कह रहे थे। I think your volume is a little low. If you could increase it. Yes, अभी सर इज इट बेटर? Yeah, fine, go ahead. तो मैं कह रहा था पाकिस्तान के 2 पहलू हैं, और वो पहलू जब आप अभी इस वार्तालाप की बुनियाद रख रहे थे उसी से निकले हैं। आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया। एक समय था, आई थिंक जनरल आरिफ थे जिन्होंने कहा था स्ट्रेटेजिक डेप्थ, और अभी ये हालत हो रही है। मैंने सुना कि अफगान की करेंसी is 30 times stronger than the Pakistani currency, yes. तो मतलब वो जो जिस डेप्थ के ख्वाब थे वो तो शायद बचा ले पाकिस्तान। अफगानिस्तान एडवाइजरी इशू कर रहा है कि साहब पाकिस्तान मत जाइए। नहीं, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इज नाउ द स्ट्रेटेजिक डेप्थ फॉर अफगानिस्तान। दिस इज अ स्ट्रेंज आयरनी। G20 की आपने बात की, जो अभी जनरल आसिफ मुनीर का ग्रेट रीसेट डॉक्ट्रिन है, उसमें उन्होंने ये मुद्दा ये भी उठाया है कि एक दिन इंशाअल्लाह हम G20 के मेंबर बनेंगे। सो मेंबरशिप इज एस्पिरेशनल फॉर पाकिस्तान ऑफ द G20। तो मेरे को ये 2 ख्याल आए मेरे जब आप बात कर रहा था। बाकी सर 2-3 पाकिस्तान पे जल्दी से मैं टिप्पणियां करता हूं, और जो भी आप सवाल करना चाहें। एक बात तो ये जिसे कहते हैं बड़ा स्ट्रेंज फैक्टर ये है कि इमरान की जो मकबूलियत है वो बरकरार है। yes. His popularity remains intact. Now that is worrying for geopolitics. But जो कबूलियत है वो नजर नहीं आ रही। आसिम मुनीर will not allow him to be legitimate.
तो मेरे को तो ये लगता है कि उसको या तो ये जो तोशाकाना केस है या वो जो साइफर उड़ाया था वो जो केस Yeah, है कहीं ना कहीं he'll be उसको put फंसा in के the camp. हाँ हिल कर देंगे. दैट इज द ओनली वे. अदरवाइज मतलब आई एम लिटिल अमेज्ड कि हिज पॉपुलैरिटी रिमेन्स इंटैक्ट और अगर उनको वापस लाया गया इलेक्शंस में तो इट इज माय बिलीव दैट ही विल स्टिल स्वीप द इलेक्शंस. तो Yeah, उनको इलेक्शंस लड़ने ही नहीं देंगे. ये है. yeah. दूसरा ये जो अनवर काकड़ हैं जिसको लाया है Kakad. इन्होंने टेक्नोक्रेट है. तो जैसे आपने कहा सर मेरे को तो लगता है कि सारी जो सियासती जमातें हैं उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के सामने हार मान ली है और ये जो पावर है दे हैव प्रेजेंटेड इट टू आसिम मुनीर ऑन अ प्लेटर. इट इज अ साइलेंट कू या इट इज अ गिफ्टेड कू कि साहब आप संभालिए जो आपको करना है आप करिए. उसके लिए उन्होंने काकड़ को ले लिया है. टेक्नोक्रेट मे बी कॉम्पिटेंट इन वेरी वेज बट कोई सियासी मसला जो Yeah, है he's got, yeah. राजनीतिक मसला वो सामने नहीं आएगा. अब इनका ख्याल ये है सर कि इलेक्शंस को जितना ढकेल सके ढकेले. तो मेरे ख्याल से कुछ फरवरी मार्च 2024 की बात हो रही है और इस टाइम में जो इनके वित्तीय मुद्दे हैं इकोनॉमिक इश्यूज उनको सुधारने की कुछ कोशिश की जाए. और इस संदर्भ में जो आसिम मुनीर ने जो एक मीटिंग की थी बिजनेसमैन के साथ कराची में एक की है और एक लाहौर में. मेरे को याद आता है सर जब मैं कर्नल था आपके समय भी ये पाकिस्तान के कुछ डॉक्यूमेंट जब आते थे उनके को कमांडर्स कॉन्फ्रेंसेस के तो वो दो हिस्से होते थे. पार्ट 1 यूज्ड टू बी ऑपरेशंस and part 2 the corps commanders will pronounce judgment on every issue from water to sanitation to health. वो जो पार्ट 2 वाला मसला है उसमें कोई कमी नहीं आई क्योंकि ये जो मीटिंग थी उसमें पहले वो कह रहे थे 1 पेज. अभी इन्होंने आसिम मुनीर साहब ने एक पेज रख दिया है सामने और कहा आप सब इस पेज पे आइए. जो मैं कह रहा हूँ ये सारे पेज पे आइए. और पूरी सियासती जमातें जो हैं मीडिया जो है सारे उस पेज पे. ये जो मीटिंग हुई ये कहाँ होती है 4 कोर के ऑडिटोरियम में. तो पाकिस्तान का मतलब सर ये हाल हो गया है कि जो सिविल सेक्टर है उसकी मीटिंग भी मिलिट्री ऑडिटोरियम्स में हो रही है. अब आपकी अगर मीटिंग्स मिलिट्री ऑडिटोरियम में हो रही हैं तो फिर आप क्या अपना हक रखेंगे उसके सामने. एनीवे दैट सेड he also I think Asim Munir has got that old hangover of dictators. जो अयूब साहब का ख्याल था मुशर्रफ का कि साहब हम आएंगे और पाकिस्तान को सुधार देंगे. होने वाला नहीं है. बट जो उन्होंने कुछ बातें कही हैं जिसका आप जिक्र कर रहे थे एक इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल which means the seat for the Pakistan army at the economic table has been formalized. और उसमें इन्होंने ये बात की ये 25 बिलियन सऊदी अरेबिया से कुवैत से यूएई से वो तो ये फरमा रहे हैं कि बातचीत हो गई है और ये अगले 2 साल में ये आएगा. तो आए या ना आए समझ में नहीं आता है. और उन्होंने वो ही बातें कही है कि साहब शुगर लॉबी का कैसे. अब जब वो शुगर लॉबी का बात करते हैं तो आसिफ जरदारी पे उंगली उठती हैं. he is talked of tackling various mafias corruption. So I am saying good intent but innocence. क्योंकि जब तक पॉलिटिक्स पाकिस्तान की उसमें जान नहीं आएगी ये मसले कभी नहीं होंगे. पाकिस्तान के मसले तभी हल होंगे व्हेन देयर पॉलिटिक्स गेट्स गोइंग. ये जो ये ख्याल है कि साहब हम पॉलिटिशियन को दूर रख के हम that will not work. इकोनॉमी को ठीक कर देंगे. these are extremely immature innocent propositions. they don't work. तो फिर वो बात हो रही है साहब की आसिम मुनीर साहब ने एक पेज पे बता दिया है और सब अभी राजी हैं. ऑल स्टेक होल्डर्स आर ऑन बोर्ड और एक बड़ी आसिम मुनीर डॉक्ट्रिन बन रही है. इसके 2 चीजें हैं. ऐसा लगता है दैट एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग वो किसी खास सियासती जमात के पक्ष में नहीं है. इनफैक्ट जो उन्होंने कमेंट्स दिए हैं he has commented adversely on politicians across political parties. Yes. तो वो कोई लाडला नहीं होगा इमरान टाइप क्योंकि वो जो लाडला एक्सपेरिमेंट था वो तो बिल्कुल वो खत्म हो गया. it really backfired like
रैमजेट प्रोजेक्टाइल और व्हाटएवर। सो वो तो एकदम खत्म हो गया है। अभी एक नई सिरे से पाकिस्तान की सियासत शुरू हो रही है। और अब तो सर आई रियली डोंट टेक प्लेजर, मेरे को तो दया आती है कि जो हमारा एक नेबर हो उसकी इतनी खराब हालत हो जाए कि अफगानिस्तान नसीहत दे, उनकी करेंसी से कंपेयर हो। और साथ ही साथ आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया, ये जो टीटीए और टीटीपी की जो साझगांठ है वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, इट इज वरीइंग। यू सी द नंबर ऑफ Yeah. अटैक्स and I feel that Pakistan will get increasingly embroiled in this. और दूसरी बात सर जो मुझको बिल्कुल जो मैं समझता हूँ बहुत चिंताजनक है, वो जो पाकिस्तान की एक्सेस बनेगी ये टर्की, शायद सऊदी अरेबिया, चीन और अभी रूस, बिकॉज रूस भी अभी चीन का पक्षधर हो रहा है। और ये जो एक एक्सेस बन रही है हमारे वेस्टर्न होराइजन्स में, ये सर it should worry us greatly. The Yes, I Pakistan have no Army doubt. Force Chief going to Turkey बड़ा उनको इक्विपमेंट दे रहा है, ड्रोन्स वगैरह। और ईरान, अब ईरान को सर वी शुडंट अंडरएस्टिमेट, ईरान हैज इमर्ज्ड एज अ मेजर वेपन सप्लायर टू रशिया, उनके शहजाद ड्रोन्स वगैरह। तो वी शुड, while Pakistan is not so much of a problem, जो वेस्टर्न होराइजन्स हैं in terms of these gathering storms, these new alliances, is something that we should pay attention to. दूसरी चीज जो ये है सर, तीन जो जिसे कहते हैं मुख्य किरदार जो हैं पाकिस्तान के, वो अगले कुछ महीनों में जाने वाले हैं। डीजी आईएसआई नदीम अंजुम, प्रेसिडेंट अलवी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बंडियाल। इससे भी Yeah. कुछ पाकिस्तान की सियासत में चर्न आएगा, बिकॉज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस is a totally law abiding man। और वो आसिम मनीर के जो रहा है उसमें कुछ मुश्किलात पेश करेंगे। he is known to be absolutely law abiding, going by the book, quite an unpredictable character. He may pose some problems for आसिम मनीर। और बाकी ये अलवी साहब, इमरान साहब के जो दोस्त ज्यादा थे, सदर कम थे, वो जा रहे हैं। और डीजी आईएसआई he is going, and of course because he's a prominent character in और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई की मुलाकात हुई पाकिस्तान के सदर से, उसमें मैंने सुना है कि ये some agreement has come that they will postpone the elections, take them to about February, March, and use this time to prop up Pakistan's economy. वैसे ये ख्याल अच्छा है कि 6 महीने में आप इकोनॉमी सुधार देंगे। I don't think it's going to happen. No, that will not happen. But my thing is, will the elections ever happen? Elections तो ये कराएंगे सर। They know that if you can do back seat riding, सर उनको प्रॉब्लम क्या है, वो वैसे ही सारे इनके सामने चित हैं। I don't think anybody is battling. शहबाज शरीफ ने तो सरेआम कहा है कि I enjoy a very good relationship with the establishment. He keeps telling his elder brother कि भाई please don't create problems with the establishment. So the establishment is become a factor. अब we have to yet again wait for that wise politician who can force the establishment to recede. But उनको coup करने की जरूरत ही नहीं है। या तो वो एक पेज पे हो जाते हैं या एक नया पन्ना खोल देते हैं और बाकी सब उस पन्ने पे आ जाते हैं। So their power has now become such that they don't need to stage a coup. I go with you. What are your views on the issues of disturbances in Pakistan? Because power bills के ऊपर disturbances हुए हैं अभी। अभी गिलगिट बाल्टिस्तान में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल में 9 तारीख कल ये their lawyers are also going on a strike and they want this, certain things. So will this become a factor? And if this gains momentum, where do you see the politics of Pakistan heading and the whole lot? This will be something which we need to watch. Why I'm saying is it all impacts the security system, which we have to think of. Definitely, sir, because this will lead to instabilities. You see, the larger problem is what, sir? Why is corruption so rampant?
because there is no institution which has credibility. अभी कल परसों ये खबरें आई कि उनके जो चीफ जस्टिसेस थे, लास्ट 3 चीफ जस्टिसेस, they have been using government money to renovate private houses. Yeah, that's normal for अब them. जब चीफ जस्टिस इस किस्म की चीज करेगा तो आप क्या आइन की बात करोगे? व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विल यू इंश्योर? तो which is that institution which is above corruption? Corruption has become so deep in Pakistan, and Yeah, this is why I give Asim Munir the outside chance, because Asim Munir, at least personally, is honest. He has this reputation of integrity, of being a stickler, of being, so he does stand that outside chance because he's the only one with credibility. At the end of the day, sir, all authority is moral. In many ways it is moral, yeah, and there's no the doubt. only institution which still has some moral authority left Yes, is so perhaps the the army, Pakistan chief. yeah, let's see. So what you outlined is Pakistan, which is going to be troubled, tending towards an anarchic situation, economically, going down because already the triple century to ho gaya inka Pakistan rupee ka. And I was just seeing even a liter of petrol costs over 300 rupees in Pakistan, right? And what's surprising is for the best part of the last Sugar century, is 210 rupees a good, yeah, kg. yeah, In, and it's horrible. In fact, what I was seeing today evening is that for the I'm best told, part of sir, last, आपने electricity bill की बात की. yeah, An average electricity bill is 42,000 rupees a month, जबकि month, minimum wages भी 32,000, but they 32,000. come, yeah. What will these So poor I chaps? think there's going to be a problem there, and उसके साथ साथ आप ये TTP and company will not let go, increasing problems on the Durand line and that side. So, but Pakistan will not give up on its idea of revenge against India. And for that, they'll go anywhere, any length with Russia, without Russia, Iran, Saudi Arabia, Turkey, and they'll make anything, and of course, China, to, you know, extract that revenge. And that won't go. And that's a factor which we cannot ignore. ये जो So, आपने बात बात उठाई सर, इससे मैं 2 मिनट के लिए जुड़ना चाहूंगा. yeah, please. This is in the context of G20 also in our case. See, when we, sir, are taking ये जो विदेश नीति के मामले हैं, जो वैश्विक चुनौतियां, ग्लोबल चैलेंजेस के मामले हैं, जब हम इनको दिल्ली से दूर छोटे शहरों में ले जाते हैं, तो कभी कभी greater wisdom emerges. As you enlarge the arc of wisdom and talent, उसमें ज्यादा wisdom आता है. जो आपने ये बात उठाई, other day I was listening to a very prominent Balochi politician whose name I don't recollect, but he was on a show with this chap, very good journalist called Anwar Saeed, और उसने कहा कि पाकिस्तान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? He said peace with India. I was amazed. So a Yeah, you're provincial right. politician has such clarity. He says हम क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं, वो कहाँ निकला जा रहा है. So sometimes when you take foreign policies and these matters away from these traditional elites, उनमें ज़्यादा समझदारी आती है. Yeah, there's no doubt. He said that, and I rewound it and heard it again, and he said हमको भारत के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो सुलझाने चाहिए. कश्मीर पे बातचीत हो सकती है. So sensible. Yeah, I agree with you completely. In fact, this is what Parvez Hoodboy has been writing in columns and more. In fact, I've seen this view ki make amends with India coming out quite strongly with many of their columnists, but then we know that they probably are a marginalized lot and we really can't hope. So let's turn towards a bit towards China, which is our other adversary, which is entering instability. In fact, demography, economy works, and of course the internal politics of this thing, and the external thing, and the chaos. I wouldn't say chaos, the instability they've created with the new map, just on the just before a major ASEAN summit and the G20, all that. Let's look at that because that's got the larger impact on us. तो
For a change, I mean, one should not take vicarious pleasure, but just as this neighbor is in trouble, that other neighbor is in greater trouble. Greater trouble. Yeah, I और agree ये with you. जो मैप की आपने बात कही है सर, I think the best response I saw was on Twitter by General Rajiv Narayanan, Narayanan, where yeah. he made a similar map of Yeah, and split it. Kolch and said, "Please don't mind," or something like No, no, what you know Chinese what? don't No, no, no. overread. What I wanted to put across to you is just one day before he put it out on Twitter, we were discussing that map on Gunner Shot. You know, there's a map of 1932. 1932 का map है, which I put out in an article, a researched article in Eurasian Times, and also we discussed it in Gunner Shot. And the next day, Narayanan did the trick of putting, taking that. And actually speaking, what Narayanan has put out is the 1932 contours of China. It's right. The Chinese official American map of China in 1932 is that. All this nonsense with these guys keep talking is bunk. So, And on a more yeah, serious note, if that is the response of their foreign policy establishment, it is churlish. जैसे हिंदी में कहते हैं अल्लड़पन है, बचपना है. I mean, what are you trying? You're a 21st century superpower. What are these stunts of maps? But जो सर बाकी चीजें हैं, I think now China is in serious trouble. जो उनकी economy है, अभी many people are staying. They are comparing it with Japan. So Japan had this great rise there's no doubt. from 1979 to 1990. Then it declined and it hasn't recovered since to the 1990 levels. तो ये कह रहे हैं कि this is stagnation, if not implosion. It is definitely stagnation. There are deep worries. Oh, there's no point recounting it, but debt, the fact that they have started not stop making their data transparent, जो बाकी unemployment rates which are soaring, so on and so forth. But जो खास मुद्दा ये है सर, जो उनकी real estate economy है, much of their provincial economies prosper on the basis of some linkages with the real estate. And that is why China is greatly worried. First it was Evergrande, फिर वो क्या है country garden, now Sino-Ocean, एक और कोई company जिसने suicide कर ली. Yeah. So it is. They also say it's a mother-in-law economy because the males are more than their women. To get a daughter's hand in marriage, आपके पास एक घर होना चाहिए. और जब घर ही country garden ने तबाह कर दिया, तो आपकी शादी का क्या होगा? So the mother, it is happening. It is having grave effects. That is one. दूसरा सर, many of these problems are of their own making. Though Jack Ma के साथ किया. Jack Ma was a small town boy who made it big. He was a rock star. और लोग कहते हैं कि वो मिश्रण थे बिल गेट्स और एलॉन मस्क के. और ये जो conscious choice CCP की थी that if Jack Ma becomes as powerful as the Communist Party, we will diminish Jack Ma. That has had a great effect on business confidence, public confidence. उससे वो रिकवर नहीं कर पाए. तो ये जो चाइना की सोच है that they will cherry pick, वेस्ट से कैपिटलिज्म ले लेंगे बट उसके जो फ्रीडम्स हैं, जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पारदर्शिता है, उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसका आदर नहीं करेंगे. दीज आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ दैट प्रॉब्लम. नाउ आई एम नॉट सेइंग चाइना इज डन, बट इट इज इन वेरी सीरियस ट्रबल एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस. और जो सर ये जो बाकी पुशबैक हुआ है जी के खिलाफ, ये जो कैंप डेविड समिट हुआ है, जापान, साउथ कोरिया, यूएस, अभी आप देखिए बाइडेन साहब आ रहे हैं. जो जी ने सल्क किया है, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एंड यूएस. द स्पेस दैट ही हैज वेकेटेड, वी मस्ट मेक स्मार्ट यूज ऑफ इट टू लीड इन ग्लोबल फाइनेंस एज अ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ. अगर हम ये सब कर सकें, और देखिए वापसी में बाइडेन इज गोइंग टू वियतनाम, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद वियतनाम. The Americans, sir, I'm told, there was a very interesting discussion I saw. They have reopened embassies in Maldives, Seychelles, Mali. Seychelles, they had closed down their listening post after the Cold War. They have reopened it. An Indian submarine is in Australia. USS Kentucky is of Korea. ये जो सारा pushback हुआ है,
इसका जी साहब ने अनुमान नहीं लगाया। और जब वो अपने पीएलए के पास जाते हैं, देयर पीएलए इज नॉट रेडी। वहां दो गुट हैं, एक कहता है साहब दैट दिस इज अ रिसीडिंग स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी, ताइवान करना है तो जल्दी कीजिए, नहीं तो हमारी मुश्किलातें बढ़ती जाएंगी। और दूसरा है वो गुट कहता है कि साहब हम तैयार नहीं है। सो जी इज caught in a real bind and I think these worries have kept him out. जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, उन्होंने ब्रिक्स में कोशिश की, उसको एनलार्ज करके थोड़ी सफलता भी मिली, बट ये जो पोजिशनिंग की कोशिश कर रहे हैं कि साहब ये G7 का मुकाबला करेगा, आई डोंट थिंक दैट इज वाइज। और ये जो जी की पूरी कोशिश है ऑफ क्रिएटिंग एन ऑल्टरनेट वर्ल्ड ऑर्डर, दिस इज गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर जी। बट जहां तक हमारा सवाल है सर, वी हैव Yeah. टू बी वॉचफुल अबाउट टू थिंग्स, कि जो जिसको देख के मुझे घबराहट होती है, ये जो चाइनीज फॉरेन पॉलिसी लेवरेजेस हैं रशिया के ऊपर, जिस तरह रशिया ने अड़बंगे लगाए हैं ये पूरे G20 में ऑन वेरियस ट्रैक्स, इज द आर चाइनीज लेवरेजेस ऑन रशियन फॉरेन पॉलिसी, उसका क्या असर भारत और रूस के जो संबंध हैं उस पर पड़ेगा? ये एक सोचने वाली बात है। तो दो चीजें हैं, जी इज इन ट्रबल। अगर वो यहाँ नहीं आ रहे हैं, एपेक नहीं जाते हैं और अंतरराष्ट्रीय जो मंच हैं उससे पीछे हटते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा मौका है, वी शुड मेक यूज ऑफ दिस। और ये जो पूरी G20 समिट है, इसमें बड़ी अच्छी चीजें भी हुई हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, मल्टी डेवलपमेंट बैंक्स के जो रिफॉर्म्स हैं, और जो दूसरी चीज जिसकी बाइडेन साहब जिक्र कर रहे हैं कि ये जो ग्लोबल फाइनेंस है, वो कह रहे हैं दैट वी विल ऑफर टू द वर्ल्ड बेटर नॉन कोअर्सिव लेंडिंग ऑप्शंस। Yeah. ये सब जो चीजें हैं, ये जी साहब की और चाइना के खिलाफ जाएंगे। तो मेरी समझ में जो चाइना के बुरे दिन हैं, वो आई एम नॉट सेइंग कि उनकी शुरुआत हो गई है, बट खतरे के बादल हैं, इकोनॉमिक्स Oh, में, नेशनल yeah. सिक्योरिटी में, इंटरनेशनल ऑर्डर में। और इसका हमको पूरा फायदा उठाना चाहिए, Yeah. फायदा On उठाना that, चाहिए टू स्ट्रेंथन आवर ओन पोस्चर। yeah, I think you made some very interesting points. Let me reinforce it with the research I have done on China. Uh, my estimate, and so far, whatever I've estimated about China has not really gone wrong, is that for the next 10 years, their economy can't recover because they can't recover out of the property problem and they can't recover out of their tech problem. Tech finance, finance tech. Not the technology per se, but the technology sector. The reason is simple. The number of people whom they have is far lesser than the houses they have today. Their requirement of houses for the next 10 years, they have overbuilt or taken money from people. And those houses are not being built because Evergrande is down, like you said, Country Garden is down, Sano Ocean is down, Shimao is down, Fantasia is down, Kaisa is down, all those are down. So as a result, and all this borrowing is internal borrowing. One thing, if you analyze the Chinese borrowing, it is not external borrowing. All these follows. They have some bonds outside, but largely the borrowing is internal. And who have bought these bonds? It is the investors, financial investors. And these financial investors have internally sold it to people. So the people are going to, at the end of the day, cop it. If they cop it, they don't have money in hand. If they don't have money in hand, you can't think of consumption. If you can't think of consumption, and in any case, the exports are going down for the past 5 months, it's been contracting exports and imports. So this economy is not going to revive in a hurry. And Xi Jinping, like we discussed, आपने हमने 2 बार डिस्कस किया कि आपने, इनफैक्ट आई स्टिल रिमेम्बर द वर्ड्स यू सेड कि इसके एडवाइजर्स ने बोल दिया कि साहब फिक्र मत करो, हमारे पास बहुत पैसा है, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन पावर एंड मिलिट्री एंड ऑल दैट. They did it probably a little prematurely because now that money is not going to come in, right? And all their money, their economy is dead economy. My view is that a lot of their GDP is going to be dead GDP. And of course, come 2030, and this is something mathematical, ये बदली नहीं हो सकता, right? आबादी, इनका आबादी जो change in the thing, and the deep fall in their population in the next 10 years, 2030 to 2040,
is going to bring a lot of changes. But then I'm not looking at it that far, right? I still go by what you say, what you said to me last time, that the focus of Xi Jinping is diplomacy and military. Because he still, और अभी भी खर्च कर रहा है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर. आजकल में उसका जो फ्यूजन एयरक्राफ्ट कैरियर है दोबारा वो लॉन्च होने वाला है. Right, every day there's something or the other coming out about his some laser gun and some rail gun and something or the other, some feature or the other. You see news coming out about the military capabilities. And then, of course, he's come out with this map, which is why you call it churlish or not is a different thing. But the intent is not is anything, it is offensive to the extent that look, he's put Taiwan on notice and maybe even us on notice that I have to take these areas. So in that context, I think the military threat and the security threat from China is still alive. But before you dilate on the security threat, which I think is important part of our discussion today, आप जरा G20 के ऊपर थोड़ा गौर कीजिए and then shift to the security. Then that becomes a whole better way of we'll deal with the security threat in the end. तो G20 के सर दो तीन मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं. One is that I am a big fan of this, taking foreign policy down to the smaller towns and cities, उसको छोटे शहरों में ले जाना. और मेरा ये मानना है अभी हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी ये करना चाहिए. देखिए सर, जैसे आपके ये प्लेटफॉर्म्स है, I never thought that when you get such platforms, you democratize national security, you will get such a response. We always thought that national security was elitist, a few Tamil Brahmins, if I may use that word. Tambrams. They know what is best. It may not be true. No, there not. Could be a lot of wisdom in smaller towns, say in Aligarh, Bahraich, Jammu, Vijayawada. And that will be language agnostic. ये दूसरी बात जो है, ये जो विदेश नीति है और national security है, they should not be captive to English speaking audiences. नहीं, इसीलिए तो हम हिंदी में बात कर रहे हैं. बिल्कुल सर, हिंदी, इंग्लिश, so Hindi, Tamil, all that. So I am a big fan of this, and therefore ये जो एक making it a people's G20, I am a big fan of this. We should also do this in national security. Far more seminars, far more. If we do this, दो चीजें होती हैं सर. एक तो you enlarge the arc of wisdom and talent. You may get a very talented strategic affairs analyst in Hindu College Delhi. You may get it in Christian College Chennai or whichever other college they have not. तो बिल्कुल हमको ये करना. और उससे दूसरा ये होता है सर कि जो प्रोविंशियल पॉलिटिक्स है उसमें भी ये नेशनल सिक्योरिटी की समझ आती है, उससे भी एक जुड़ने की चेष्टा होती है, which is extremely important. Like I had a conversation with the Chief Minister of Uttar Pradesh, and he to me sounded very clairvoyant on matters of national security. Oh, that came as a big surprise to me. I'm sure there will be many more chief ministers like that. तो ये जो एक पहलू है of democratizing national security, विदेश नीति, global challenges, this is a very positive step. It is not merely cosmetic. We need to understand its. There's no doubt about it. दूसरा सर, G20, I just have one more observation, that basically it started as an economic summit after the 2008 crisis. But आप देखिए जिस तरह से ये विश्व जा रहा है, वित्तीय समस्याएं तो हैं, बट जो भौगोलिक चुनौतियां हैं, geopolitics, that is now beginning to dominate. And G20 also will reflect. So G20 today is a convergence of geoeconomics and geopolitics. Correct. जो आपका दिल्ली डिक्लेरेशन होगा, मान ली उसमें 50 पैराग्राफ्स हैं, 40 will be on items of economics, all the technical stuff which is happening like digital public infrastructure, green energy, energy transition, वो बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं. But geopolitics भी उसके साथ जुड़ेगा. And like Z साहब जो नहीं आ रहे हैं, उनका क्या मानना है? This is my common sense deduction.
उन्होंने देखा 20 लोग जो हैं 10 तो उनके बरखिलाफ हैं ही, कम से कम यूक्रेन के मामले में. So why come and waste time on this? But the mistake that he's making is that when he doesn't come here, if he doesn't go to APEC, he will vacate the space for USA and India. Yeah, he's already vacated in ASEAN. Exactly. So geopolitics और geoeconomics जुड़ रही हैं. आप देखिए सर, जैसे and here democracies and the West democracies have to be careful because China is not a pushover. I am told जो चाइना और आसियान का ट्रेड है वो $1 ट्रिलियन हो गया है, और जो यूरोपियन यूनियन और यूएसए का ट्रेड है वो $900 बिलियन है. तो अभी यूएसए और यूरोपियन यूनियन ने ये देखना है कि कैसे वो फाइनेंस शिफ्ट करे इमर्जिंग इकोनॉमीज की तरफ ताकि चाइना का मुकाबला हो सके. एक टाइम था लोग कहते थे इट इज द इकोनॉमी स्टूपिड. आई हर्ड संजय बारू से इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी. Today I will say economy, geopolitics, national security, equally important. चाइना का जो ग्रोथ है वो इसी में हुआ है that they have sensibly converted जो इकोनॉमिक सरप्लसेस हैं उनको नेशनल सिक्योरिटी हार्ड पावर में तब्दील किया है. और नेशनल सिक्योरिटी doesn't mean the military alone. Technology, innovation, ecosystems. Space. So China and the CCP have been the smartest generators of power. ये हमने करना है, ये डेमोक्रेसीज नहीं कर पाई. जैसे इतनी तवज्जो है ये 3 पैराग्राफ्स डिक्लेरेशन के कि साहब यूक्रेन में वो 3 पैराग्राफ्स क्या है, वो रशिया दी एग्रेसर, ये वो बहुत बढ़िया. व्हाट इज द पॉइंट ऑफ गेटिंग दीज पैराग्राफ्स राइट इफ द वेस्ट लूजेस अ वॉर इन यूक्रेन? वहां तवज्जो करिए. नाउ दैट और ये लोग अभी जो दबी जुबान में पहले कह रहे थे अभी ओपनली कह रहे हैं कि भाई यूएसए जो है $900 बिलियन आप स्पेंड करते हैं उनके मिलिट्री पे. दे हैव नॉट वन अ वॉर फॉर लॉन्ग. वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, लिबिया, यूक्रेन, एंड दिस इज द मैसेज दैट चाइना थ्रोज अक्रॉस. तो हमें ये बहुत वो यूक्रेन मिसाल के तौर पे कहते हैं कि आप यूएसए के साथ जाएंगे, देखिए आपका क्या हश्र होगा. So the democracies have to learn the art of delivering and winning, converting economic surpluses into hard power so that we prevail in the geostrategic competition. ये हम में एक खामी है. लास्ट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, देखिए सर क्या हालत हो गई है चाइना की भी और यूएसए की भी. चाइना की इकोनॉमी इतनी खराब है और उससे मुश्किल क्या है कि जैसे उनकी इकोनॉमी खराब होगी, for legitimacy they will turn to nationalism, and nationalism could mean Taiwan. So the dangers of conflict increase. उधर आप देखिए यूएसए का क्या हाल है. उनका जो डेट है, डेट सर्विसिंग 2024 is $1 trillion, larger than the defense budget. तो उनके पास वो पैसा ही नहीं है मॉडर्नाइजेशन का. मैं कहीं पढ़ रहा था कि they don't have 7 days worth of munitions and missiles in Taiwan for a Taiwan contingency. तो इकोनॉमिक्स और जो आपकी बाकी काबिलियत है उनका ये लिंकेज है. एंड सो इकोनॉमीज मैटर ग्रेटली, बट व्हाट आल्सो मैटर्स इज व्हाट यू कैन डू टू कन्वर्ट दिस इनटू इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ हार्ड पावर. एंड हियर इंडिया के लिए 2 चीजें हैं. जो हमारी इंडो यूएस पार्टनरशिप है, दे आर वेरियस आइडियोलॉजिकल स्ट्रैंड्स. मेरा ये मानना है कि अगर हमने ये तय कर लिया है कि साहब हमने यूएस के थोड़े निकट जाना है और हम उनकी टेक्नोलॉजी जो है प्राइम मिनिस्टर के विजिट के बाद, अगर हम उसको ही हम जो टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन है उसको मजबूत करते हैं, दैट इज इनफ टू क्रिएट डेटरेंस फॉर चाइना टू बैक ऑफ. We don't need USA to come and fight its wars for us. And so deterrence if we can create, that will prevent wars. ये हमने करना है. और लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि जो रीबैलेंसिंग हुई है एलएसी पे अब हम काफी मजबूत हो गए. Our bigger problem is the greater lag with China in terms of digital capacities, rocket force and so on. तो मेरा ये मानना है कि we should say कि साहब एलएसी में अभी 1 इंच नहीं जाएगा, आप कोई मैप शैप बनाते रहिए, कुछ नहीं होगा. बट as far as the larger जो कहते हैं चुनौती है चाइना के साथ, we should wait and watch. We should go into hide and bite. And in that hide and bite, do this comprehensive national security makeover
in terms of jointmanship, theaterization, cultural transitions, जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में करना है, ये मेरा मानना है, ये हमारी नीति होनी चाहिए चाइना का मुकाबला। Yeah, I think you made a strong point. I've always been saying, and what you actually reiterated this, that the Indian armed forces are strong enough to handle any security threat for to defend the sovereignty and integrity of the nation, whether it's on the LAC or in the Indian Ocean region or on the western border, we are strong enough. What we need to do, the security makeover is required for us to rise as a global power or a regional power. अगर आपने नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनना है फ्रॉम गल्फ ऑफ ईडन टू स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, right, and if you have to control the IOR as you should, as you increase in the matrix of the balance of power, you need a different think of the security. So we need a security makeover which is far different from the defense makeover. One thing is to strengthen the defense. The second thing is to make over your security. So what are the main strands of difference between the two? That's the important thing which I want people to understand in this. तो आपने बिल्कुल सही कहा सर। लेट मी पुट इट दिस वे कि देखिए सर, इन अदर एरियाज वी आर नाउ गेटिंग एम्बिशियस। ये जो भारत है, दिस इज अ न्यू भारत, महत्वाकांक्षी है, इसमें आत्मविश्वास है। सो लेट्स से ग्रीन एनर्जी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, टेरर, वी आर गेटिंग मोर एम्बिशियस। नेशनल सिक्योरिटी में हमको अपनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ानी पड़ेंगी। जैसे आपने कहा, वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग बिग, नॉट थिंक इन द एयर बट थिंक बिग। जैसे हमने ये मान लिया कि साहब हम एक्सपीडिशनरी नहीं है। आप 2015 प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस उठा के देख लीजिए टू कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। He says we must prepare our forces to intervene to protect Indian interests and citizens across the world, enhance range and mobility. बट आप किसी भी मिलिट्री कॉरिडोर में ये कह के देख लीजिए, बोलेंगे क्या कह रहे हो साहब, आप बड़ी बातें कर रहे हो। तो मैं ये, मेरा मानना है कि हमारे नजरें आसमान पे होनी चाहिए, पैर जमीन पे, बिट बाय बिट वो होना चाहिए। और जब अक्सर मैं ये कहता हूं कि टुडे वी आर अ $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, आने वाले दिनों में हो सकता है हम $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए। तो जो कैरेक्टर एंड प्रोफाइल ऑफ अ मिलिट्री, जो हमारी सेनाओं का भाव और स्वरूप है, द कैरेक्टर एंड प्रोफाइल टू सिक्योर अ $3 ट्रिलियन इकोनॉमी विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट रिक्वायर्ड टू सिक्योर अ $35 ट्रिलियन इकोनॉमी। और उसकी सोच अभी शुरू करनी है। जैसे आप छोटी छोटी चीजों, कल्चरल ट्रांजिशंस, एआई में हमने क्या करना है, क्वांटम में क्या करना है, डिजिटल कॉम्बैट में क्या करना है, इनोवेशन में क्या करना है। आप यूक्रेन में देख लीजिए सर, you look at the HIMARS, it's a very good example of what innovation is doing, day-to-day innovation. HIMARS came as these precision systems. Then some Russian gamers figured out a way to fiddle with the GPS. The HIMAR from a precision system became an inaccurate mortar. HIMAR, I'm told they cease fire and upstick in 7 minutes. यूक्रेन को इसकी सब सामने समस्या ये है कि 7 मिनट्स आर प्रूविंग टू लॉन्ग। 2 मिनट के अंदर ड्रोन अटैक आ जाता है। यू टेक आवर नेवीज, all our ships, our surface platforms and our undersea platforms will be vulnerable to drones, just like artillery and armor is vulnerable to drones on the land. Now they are not going to overturn combat, but they are going to influence it substantially. So innovation, creativity, cultural transitions, सोच, अगर हम आज बोले कि हम करेंगे 40 साल तो वैसे ही लग जाएंगे। या इसमें डाउट नहीं है। आप जो सोच, कैरेक्टर, प्रोफाइल, our problem is moment we talk about this, हमारी जो ये 70 साल की जो सोच है वो ये बड़ी बातें मत करो। ये बड़ी बातें कभी तो करनी पड़ेंगी। That is what I think you were saying, and I quite identify with it. Yeah. Our national security makeover has to change in that manner. Yeah, actually what you said is very right. If you have gone to the moon, आपने बड़ी बात तो कर ही लिया already. You see, जो मैं हर वक्त बोलता रहता हूँ, you're one of the
4 nations today in the world to have the capability to go to the moon. And you're one of the 4 nations to harness space-based energy. And tomorrow, you space-based energy is the way out because energy resources on Mother Earth are finite, and whoever has the capability to harness space-based energy is a superpower tomorrow, and you are one of them. You already एक कदम आपने उस साइड रख दिया ऑलरेडी. एंड अगर आपने एक कदम रख दिया तो और आपका सोच भी बदली होने चाहिए की जरूरत है. If you do not, and with this capability of space, you have to also take the issue of securitizing space, which we have not thought of. And our military has to think of securitizing space, right? And this is something which I'm totally for. And of course, जैसे आपने बोला, AI, new technologies, material technologies, 3D printing, the technologies are quite a bit. But more than the technologies, सोच की जरूरत है in case you want a makeover and cater for the next generation and the next level of where we are going to rise. Okay. आपने सर स्पेस की बात की. देखिए, आई थिंक 2012 या उसके आसपास मैंने एनडीसी किया था. उस समय हम बोल रहे थे कि वी विल नॉट मिलिटराइज स्पेस. हाउ स्टूपिड, दैट इज द ओनली वर्ड. स्पेस इज अ डोमेन ऑफ वॉर फाइटिंग. US has upgraded its space command to combatant command status. उनका जो space commander है, he is now a member of the Joint Chiefs of Staff Committee. He sits alongside the Air Force Chief. तो आप unless जो आपने दूसरी बात कही moon वाली बात, the astrophysics of space in defense is totally different from the astrophysics of space in exploration. तो जब हम कहते हैं साहब ISRO will give us military space capacities, it cannot. तो ये जो मसले हैं, दे विल कम फ्रॉम, जैसे आपने कहा, आइडिएशन फर्स्ट. जब तक सोच नहीं बदली होगी हमारी, द अदर थिंग्स विल नॉट फॉलो, और इसको हमको जल्दी से जल्दी करना. Yeah, and I think that's a very fair thing, and we'll take some questions after this. The most important thing जो आज का जो डिस्कशन में उभर आ रहा है, भाई पाकिस्तान ऐसे सड़ता रहेगा और काफी दिन तक सड़ता रहेगा. चाइना के साथ जो भी हो रहा है, इट ओपन्स अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया. और ये जो G20 हो रहा है, ये आज कल परसों में अगले 2 दिन में आप देखेंगे कि इंडिया का जो स्तर है वो बढ़ता जाएगा और हमारे लिए एक गेट खुल रहा है. चुनौती हमारे लिए ये है कि क्या हम उस गेट को पार करके कैन वी गो टू द नेक्स्ट लेवल और नॉट. एंड मेरा मानना ये है कि हम चाहे कुछ करें या ना करें, हमारा जीडीपी बढ़ेगा. ये हमारा इतिहास है. बिकॉज वी आर आउट ऑफ द, अगर आप देखिए जापान, जर्मनी और चाइना, जो 3 economies which are ahead of us, all 3 of them were aided economies. All 3 of them were economies which have enjoyed a peace dividend from anything from 50 to 80 years. All economies were supported economies by the West. On the other hand, our economy has been an opposed economy. We have been through sanctions. We did the nuclear test, we had sanctions. We did a missile test, we had sanctions. For everything, we were opposed. We've gone through wars in this past 60, 70 years. We've gone through 4 to 5 skirmishes with China and full-blown wars with Pakistan and a proxy war, which is still ongoing. And plus the disasters, this, that, and all that, upheavals. So, considering all this, despite all this, we have come to this level and there seems to be nothing stopping us. So, becoming a $5 trillion or $10 trillion economy is a matter of time. It's not a matter of can we become, it is only when will we become. I don't see this thing going more than 2-3 years here and there. So, in that context, please go ahead. जो आपने बात कही सर, हमें 2 चीजें कहना था, because now it is becoming, what shall I say, excitingly nuanced. Yes. The nuance is very important. So I was just reading an article by Raja Mohan, and I want to highlight 2 points from that article. What is the challenge for us?
एक चैलेंज तो ये है in our multilateral response. There was a unipolar world led by the United States. We were not happy with that. But if it gets replaced by a Beijing-led unipolar Asia, it will be worse. Yes. तो ये एक बड़ी अच्छी बात कही. दूसरा सर, इंडिया और इंडियंस, he gives some fascinating data in that. He says कि in the Anglo-Saxon world, 200 positions are top level positions are held by Indians. Yes. 60% of them in cabinet positions. Biden administration में 140 key positions are by Indians. Radha Iyengar, some Mishra, all this. Kamala Harris है यार, vice president of that country. Rishi Sunak, Kamala Harris. Yeah, Leo Varadkar. The Republican sharpest debates are between Nikki Haley and that other wonder boy Vivek Ramaswamy. Vivek Ramaswamy, yes. So मैं ये कह रहा हूँ सर, Indians are leading the Western world. ये इसलिए हो रहा है because हमने इंडिया में टैलेंट इकोसिस्टम को नहीं खोला है. DRDO रिफॉर्म कमिटी हैज वन लाइन एजेंडा. इसमें आप टैलेंट खोल दीजिए, मीडियोक्रिटी हटाइए और टैलेंट खोल दीजिए. नाउ इफ वी कैन डू दिस, आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं सर, हम 15 ट्रिलियन पहुंच जाएंगे. इसमें डाउट नहीं है. टैलेंट के जो दरवाजे हैं इनको खोलना है और जियोपॉलिटिक्स उस पे नजर रखनी है. दैट मतलब जो the Hobson's choice we have between the USA and the China, how do we navigate that in a very fine and wise manner? ये जो दो चीजें. Yeah, I think we made some very important points. Our challenges are not of survival. Our challenges are how to go up the value chain. Our challenge, and that is a more difficult challenge. More difficult challenge, and we need greater leadership. We need this thing. And actually, let me put it across to you. You put the thing. Actually today you clarified my mind also. When I started Ghana Short, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने किसी ने बोला मैं ये इंग्लिश में शुरू करूंगा. तो someone said नहीं सर, क्या इंग्लिश में शुरू कर रहे हो, हिंदी में शुरू कीजिए. मैंने बोला यार मेरे को हिंदी तो आता नहीं. कहता क्या फर्क पड़ता है, आप कुछ भी बोलो, हिंदी में धीरे धीरे सीख जाओगे. और ये सही हुआ है. इसकी वजह से बहुत लोग हमारे चैनल में आते हैं और बहुत लोग आते हैं छोटे छोटे गांव और कस्बों से, और मेरे को पता चलता है जब वो अपना देशी भाषा में कमेंट देते हैं हिंदी में. A lot of comments I get from in Hindi, and अगर आप उनको आप पढ़े तो it's a very important, they're making some important points. So this democratization. ये जो आपने बात कही सर, मैं एक चीज कहना. या बोलिए. C.V. Raman, Nobel laureate in physics. Nobel laureate in physics. He says कि if I had the opportunity to learn physics in my native language, I would have done better. Yes. Imagine, Nobel laureate उसको physics में मिला, but because of his English education, he says if I had done it in my native language, I perhaps would have formed. So sometimes English is an obstruction. It's a barrier. We must remove it. Yes, I have no doubt about it. And like for example, just see this. See, this man is very proudly saying, "I am from Maharashtra." I'm sure he's not from Bombay, or he's not from Pune or any of this thing. He must be from some small city, and he's watching us. And that's the beauty of what is happening. I see a profusion of people who are now tuning on to geopolitics, who are tuning on to such talks of ours. And I'm very bullish on our country, right? I'm sure you are also. I have no doubt about it, right? Okay. एक बात सर, मैं very 10 second. ये जो please go ahead. Started off with Pakistan, sir. पाकिस्तान की हालत खस्ता है. But I would once again make this point कि जो हमारे western horizons हैं, वहाँ dangers are growing. Now it may sound contradictory, but I'll tell you how. A Pakistan which is smarting under its current disposition, अब उसका हिंदी अनुवाद मेरे को एकदम नहीं आ रहा है, but which is smarting under its current disposition,
will be that much encouraged to align with, say, Iran, Turkey, Yeah, yeah. Russia, and create problems for us. Yes, So, yes. China, इसमें doubt नहीं है. Pakistan's very problems may become a source of adversity. So, Western नहीं, horizons पे जो हमारी नजर है, जो alertness है, जो सतर्कता है, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए. नहीं, इसमें आपका मेरे को डाउट ही नहीं है. China might well use Pakistan as a catch paw more offensively than what we have had so far. So we have to be very, very, very clear on these issues. And I think you made a very important point about this. Right. Shall we take on some answers, हाँ, questions? बिल्कुल. Right. Okay. I'll go from the bottom. Yeah. Avdut Gorpade says he's from Kolhapur, which is great. Okay. JBJP says, General Raj, why are you so bullish and optimistic on China's future? It seems China is overwhelming. Also, does China help Pakistan to support Khalistanis in Punjab and in other states? I don't think he sounded bullish at all today. Oh, What maybe, I'll clarify that. It's a good right? question. Good. I see. मैं ये कहना चाहता हूँ कि when we assess China, see, when USA assesses China, it is assessing an adversary for which it is an away game. It is not dealing with China on its borders. If the Taiwan contingency goes wrong against USA, the consequences will not be overwhelming for USA. It's an away game. For us, it is a proximate neighbor. And my military upbringing tells me that never underestimate your adversary. Look at him carefully, gauge him correctly. If I have to err, I will err in the direction of bullishness. And I have many times said China is in but see, there are certain things we still have to see. हम $5 trillion बन भी गए, China $25 trillion. There are many things about its PLA which should worry us. तो उस सिलसिले में कभी कभी लगता है कि मैं बुलिश हूं और ऑप्टिमिस्टिक हूं. नहीं, I just wish to gauge China accurately, because any inaccurate assessment will have adverse consequences of us. Yeah, I agree with you completely because one has to have a, आपका जो geopolitical assessment and your economic assessment and trajectory of a nation when you predict is one part of the story. Dealing with it militarily is another part of the story. When you have to deal with it militarily across a border, your assessment has to be different. And मैं एक when you आपको take hard, yes, मैं आपको एक yeah, मिसाल देता हूँ. 1988, Rajiv Gandhi goes to China. So there is this great handshake with Deng, and we have those agreements. वो agreements हैं. क्या है वो? Confidence building, peace and tranquility, yeah, ये सब फलाना फलाना फलाना. And we take those agreements very seriously. और उन and he's agreements violated. के दरमियान we make sure that there is total tranquility along the LAC. और कई बार मैंने ये सुना कि देखो अभी ये रोड मत बनाओ, ये ब्रिज थोड़ा छोड़ दो, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं. And what did China do in the same period? It took advantage of those agreements to create a robust, potent military infrastructure behind us. And each time we asked ये क्यों हो रहा है, we were told नहीं, primary orientation Taiwan है, China यहाँ कुछ करेगा ही नहीं. Now this is what I wish to guard against. Yeah, I agree with you completely. If There's no you had doubt said about it at all. agreements जो है, they are no guarantee. And we were always told, no agreements, in modern international system, nobody violates agreements. What did he do? One fine day, he just rescinded all those agreements. In that sense, I'm constantly cautious about China. Yeah, that's fine. Akshar, welcome to become a member of Gunner Shot. And Visibeli, thanks for your super sticker. Uh, okay, then the next question. Okay. Your all thought about the elites of Pakistan who are profound and influence in various institutions of the Western nation.
really speaking, the elites of Pakistan, they lost their standing in the Western nations. In fact, Western nations, when you say it's only USA, largely, right? In Pakistan, in UK, they have political influence, which is there, but UK itself is not very relevant today. It's only in USA, but in USA, they're not getting many traction anymore. Okay, so we leave it at that. He says, sir, please dwell more on the possible nexus between Russia, China, Pakistan, Iran, and Turkey. A few words. तो ये देखिए, दिस इज अभी देखिए आप ब्रिक्स का स्वरूप क्या है. And how should Bharat tackle them? Yeah, fine. तो चाइना का गेम तो मेरे को बड़ा क्लियर लग रहा है. ये चाहता है कि जितने भी ये बहुराष्ट्रीय मंच हैं, जैसे ब्रिक्स, G20, इन सब का इस्तेमाल किया जाए चाइना और रूस का जो प्रभाव है उसको बढ़ाने के लिए. तो अभी इन्होंने ब्रिक्स को एक्सपैंड किया. अगले साल लीडरशिप ब्रिक्स की रशिया के हाथ में. अब रशिया, ईरान और जो इन्होंने कुछ मेंबर्स दाखिल किए हैं, यूएई वगैरह, उसके साथ अगर इन्होंने चाइना का पक्ष अपनाया, ये खतरा है. आप देखिए चाइना की कितने लेवरेजेस बढ़ रहे हैं रशिया के साथ, एंड रशिया इज वन ऑफ आवर प्राइमरी डिफेंस पार्टनर्स. सो वी हैव टू बी रियली वरीड कि भाई चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी लेवरेजेस हैं वो रशिया पे क्या असर करेंगी और हमारे डिफेंस पे क्या फर्क पड़े. एंड नाउ सी हाउ इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड. तो लोग कहते हैं साहब रशिया से प्रॉब्लम है, डाइवर्सिफाई योर इन्वेंट्रीज. अब आप देखिए, इट्स नॉट इजी. मिलिट्री के नजर में अगर आपके पास एक सिस्टम फ्रांस का है, एक यूके का है और रशिया का है, अरे साहब लड़ाई में दे हैव टू टॉक टू ईच अदर. सो डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट्स प्रॉब्लम्स ऑफ इट्स ओन. सो जो हम कूटनीति में जो हमारे रास्ते हैं और जो सैन्य क्षेत्र है उसमें जो रास्ते हैं, उनमें एक जोड़ होना चाहिए. It is very important that defense and foreign policy complement each other. It is not that you practice strategic autonomy of one kind. तो ये आपने जितने मुद्दे उठाए हैं ये बड़े important हैं. Diplomacy and defense need to come together in a long-term perspective. In a long-term perspective. तो बिल्कुल आपने मुद्दा एकदम सही. And therefore, we have to be very cautious of this new geopolitical order that China is trying to create. Right. There's more of a statement. Good evening, General Shankar and Shukla. History tells us that when there is instability amongst our adversaries or weakness in us, then the possibility of war or skirmishes is high. India needs to be vigilant and be prepared for a two-front war. A West African proverb says, carry a big stick and speak with a soft voice. Glad to be back on Gunner Shot after a short break, Jayan. I agree with you. That's the whole reason why we are doing this, talk. We have taken both. Yeah. Please go ahead. देखिए बिल्कुल आपने सही बात की. अभी बात हो रही है वसुदेव कुटुंबकम की. वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. बट वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था. एंड आई एम कोटिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स बुक द इंडिया वे. स्वामी विवेकानंद सेड the world is a gymnasium where people come to make themselves strong. आप G20 में देख लीजिए क्या हो रहा है. वसुदेव कुटुंबकम तो हो ही रहा है. A lot of initiatives to get the world together. But it is a platform for geopolitical muscle flexing. It's happening. तो विवेक इसमें होगा कि दोनों चीज, वसुदेव कुटुंबकम और जो स्वामी विवेकानंद साहब ने कहा था, उनको हम बड़े विवेक और चतुराई के साथ उसको जोड़ें, उसका मिश्रण करें. Mahatma Gandhi, I am told, said, true power speaks softly. It has no reason to shout. Now, I don't know in what context he said it, but very important. So we must create power. Power not to jackboot around the world. Power to deter. Right. Xi Jinping is just another leader. Do you think policy against Bharat would change with another person leading them? That's, of course, China. Yeah, I don't think much will change. But then, if there's a change which is to happen, China itself will change. There's going to be a lot of tumult. So that's looking too much into the future. We'll give this a skip. General Raj Shukla, sir, you said strength of PLA rocket force in previous video and on
defensive offense which demotivated me a lot. Please tell me how India will tackle it. Why should you get demotivated? Demotivated. Demotivated. We have to say कि भाई चाइना ने ये Yeah. रॉकेट फोर्स बनाया है और उसका हम हल निकालेंगे. The Yeah, बस other way बस is बात to खत्म. become ostrich कि भाई है ही नहीं रॉकेट फोर्स. No, no, no. You तो can't इसमें wish क्या away है? your adversary. You have to wish away. You have to be realistic. What he has, he doesn't have. So you analyze it and then take action against it. Don't worry. Let me tell you, India takes good action against many of these things. We know how to dismantle China when the act time comes. Relax. Okay, General Shukla sir, as you have said earlier about open mind, closed society, China and open society, closed mind, India. Are you saying change in Indian military and political mindset opening? Hmm. Yes, great change. आप देखिए, ये आप G20 ले लीजिए. When was the last time we did so much with regard to our foreign policy? और क्यों ना हो, हमारी बड़ी सोच क्यों ना हो. विदेश नीति, वैश्विक चुनौती, राष्ट्रीय सुरक्षा में भी जो कुछ कदम उठाए गए हैं, CDS, DMA, these new normals in our strategic outlook, make in India, ये बड़े महत्वपूर्ण कदम हैं. अभी हमने इन कदमों को जो ये कदम उठाए हैं, इनको हमने एक बड़ा स्वरूप देना है. We have to enhance them in pace and scale, and this is changing. Ideation is changing. For the first time, may I say so, in my view, I know General Shankar agrees, the political class seems to be ahead of military, civil, technological, administrative bureaucracies. They are saying ये आप change करिए. हम बहाना बना रहे हैं कि सर इसमें टाइम चाहिए. I agree with you. No, no, I agree with you completely. Today's political class is, आपने चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी के बारे में बात किया था. 2 दिन पहले मैं किसी से बात कर रहा था, एंड ही वाज सेइंग कि मैंने एक आई हैव टू टेक ऑर्गेनाइज स्ट्रेटेजिक इवेंट इन लखनऊ, राइट? एंड so and I said, okay, what are you going to do in Lucknow about a strategic event? He says, I'm going to talk about the Nepal border. And the chief minister knows so much about that Nepal border that it was astounding for me, and strategically. So there is people understand. It's not as if people don't understand. हम ये सोचते हैं कि politicians are not this thing, but आप मैं सोचिए. आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ. Yeah. And I've said this many times in private conversations, but I think in a public platform, I'm saying this today. When I was doing the NDC, we visit those 7 or 8 states, whichever. Yeah. Usme, in 5-6 of them, chief minister sahab, to kya, the chief secretary didn't turn up. There was one state where the chief minister came and spent 3.5 hours with us. Which was that state? Gujarat. All of us were wondering, why is the then Chief Minister Narendra Modi spending 3.5 hours on an NDC delegation? And you please check this fact. He spent 3.5 hours with the NDC delegation. So, जो मैंने opening statement कहा था कि जो छोटे शहरों हैं, जो हमारे प्रांत हैं, there are a lot of people with interest in national security, विदेश नीति. We must reach out to them. Yes. Look, let me tell you, I had a very interesting talk just 4 days back with, the Minister of Information and Technology of Tamil Nadu. Okay? There's a lot of fracas happening about the DMK, all that nonsense. You leave it out. This man is a Stanford graduate. Name, sir? Okay? Palnivel Tyagaraja. Oh, he's outstanding. The finance minister also. He's now the IT minister. And he's outstanding. Huh? You see his worldview. It's completely different. We were in the OTA and we were having a thing. So things are changing up, and what General Raj Shukla says is absolutely right. It was my personal experience that many times I was hard put to keep pace with the change. Right? There was a time when Mr. Manohar Parrikar was the defense minister, and
Raj Shukla will bear it out. I was under tremendous pressure to bring 5, 6 gun systems into the country, which didn't happen 30 years before that. What we couldn't achieve in the past 30 years, we achieved it in that period of about 2 to 3 years when he was a defense minister. And you can imagine the drive. Without him, we couldn't have happened. So there are cases, there are huge things where things are changing, right? We think that it is only in the defense. The change is apparent everywhere. It is more. You see the way our digital transactions are changing. UPI, which started 4 years back, today is going international. How can it go international? It's a huge strategic change. अगर किसी को पता है ना महसूस नहीं हो रहा तो so change is happening. We have to be alive to this change, and that is why this channel, we need change. We need to manage change. We have to understand change which is happening. Okay, this is a thing which came recently. Recent report states that China has made a breakthrough in 5 nanometer chips. Has it not broken away from the shackles of embargo? What will be its implications on their future growth and relationships? Your views, Raj? I'm no specialist on semiconductor, but I'll just make some Okay. general. Yeah. Make a general point. Then I'll Semiconductors talk. have a great bearing on the military. आप ये देखिए यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में, because the Russians have been sanctioned on chips, some 30 of their systems across 450 components are showing declining effectiveness on the battlefield. So chips proficiency today lies at the heart of military. I'm not too sure ye kya hai, but the advanced chips is therefore what the Americans have sanctioned China greatly. What will that do? It will deter their progress for a while. But China अभी पूरे जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ गया है that you can only defer proficiencies. They will master these 5 nanometer Yeah, chips. eventually they will. In a and we should get cracking. आप देखिए हमारी चुनौती क्या है, जो हमारे ordnance factories हैं, they are dumb ammunition behemoths. We don't need them. They need to get precise. ये जो marriage है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और एक्सप्लोजिव्स का, ये अपने आप में एक चुनौती है. So it is such a big challenge since you brought up this issue of chips. So I just thought I mean this is what I know and I thought I'll share with you. Yeah, see, this report has come that Huawei ProMate has got this 5 nanometer chip and it's a breakthrough and all. It had to happen one day or the other. It's only that it's imposing delay on the whole system so that the lead is kept. One day it will happen, and of course China will militarize it and exploit it and all. But the moot question, which constricts China even in this is, can China export this technology? It can't. The geopolitics won't allow this technology to get exported, right? And so it will be an internalization of thing. Militarily, you will see China is far more capable. Self-sufficiency of China will go up quite a bit. So to that extent, there are issues, but let's see how it plays out. एक मैं इसमें से छोटी सी चीज जोड़ना चाहूंगा सर, जो आपने कहा. You see, one is the science of chips, the science of quantum, the science of space. China and the USA and all are investing in another domain, जिसने आपने कहा, the geopolitics of space, the geopolitics of chips, the geopolitics of quantum. That's another domain. Unless you understand the geopolitics, these things will not happen. So this brings me to my original point that national security is getting extremely complex and sophisticated. Sir, 9:30 मेरे को dinner के लिए Yeah. No, fine. We'll leave it at that. I think we've covered most of the questions. I think we've had a wonderful discussion, very clear-headed discussion as to where India should go, what are problems and all. On behalf of all my viewers, I'd like to thank General Raj Shukla for the great expose he's given on these subjects. We've got a huge canvas. Thanks a lot. And your final words, Raj, and then we'll say Jai Hind. Nothing, sir. Just thank you, and thank you so much for the opportunity. Yeah. And we'll come after some time, 10 odd days later, we're going to talk about the changes we have to do in the DRDO and what the overall of thing. And we'll give our
thing. In fact, I'm going to conduct 2-3 sessions with different people so that we get different ideas on everyone's. Why don't we do a session together with 2-3 people? So on DRD. We'll do that. We'll do that. I'll work it out. Okay. Right. Nice. Thank you, Okay. sir. Good night. Right. Thanks a Thank you. lot and good night. Bye. Good and Jai Hind.